students, in this question given that let A, B, C an equivalent triangle inscribed in the circle x square plus y square is equal to a square. Okay, suppose perpendicular from A, B, C to the ellipse x square upon a square y square upon b square is equal to 1, where a is greater than b. Okay, meet the ellipse respectively at p, q, r, so that p, q, r line on the same side of the major axis. Okay students, so a, b, c respectively prove that the normal of the ellipse drawn at the point p, q, r are congruent. Okay, so first we draw the diagram of this. So here we draw the diagram. So this is our y-axis and this is our x-axis. Okay, so according to the question we have inscribed circle. So this is our circle. Okay, so let's say this is our circle. Okay, let me draw it clearly. So this is our circle. Okay students, so in the question given is a, b, c. Okay, a triangle in this circle. So let this point is our a, this point is our b, and let this point is our c here. Okay, so we meet those 3 points, then connect the a to b. Okay, this is our point a and this is our point b. Okay, and then connect b to c. So here we connect b to c. Okay, and now connect a to c. Okay, so this is our triangle. Okay students, and also given that in the question that a ellipse inside the ellipse is also given. Suppose perpendicular from the ABC to the ellipse. Okay, so ellipse is also given where met the point at PQR. Okay, so here we draw our ellipse inside the circle. Okay, so let me draw it clearly. So this is our ellipse inside this circle. Okay, that this is our ellipse. Okay, inside this circle. So here, so in a circle we have point A, B, and this point is C. Okay, so if we draw a normal, then it cut on the ellipse at point P, Q, R. So let this is our point P, and this is our point Q, and this is our point, let's say here is R. Okay students, so let the coordinate of A is, so the coordinate of A is let equal to the A cos theta, A sin theta, A cos theta, and comma A sin theta, and the coordinate of B is equal to the A cos theta plus 2 pi by 3 comma sin theta plus 2 pi by 3. Okay students, and the coordinate of the C we let here A cos theta plus 4 pi by 3 comma sin theta plus 4 pi by 3. Okay, so now point P is on ellipse is given. Okay, so point P is on ellipse, then the coordinate of P is, so here the coordinate of the point P is equal to the A cos theta comma B sin theta. Okay, and coordinate of point Q is here. The coordinate of point Q is A cos theta plus 2 pi by 3 comma B sin theta plus 2 pi by 3. Okay student, then coordinate of R is here A cos theta plus 4 pi by 3 comma B sin theta plus 4 pi by
3. Okay, so now we have the point of coordinate of A, B, C and P, Q, R. Okay, so given P, Q, R are same side of the axis, which mean AP are same side on the axis and BQ are same side on the axis. Okay, so let this is AP are same side on the axis and BQ are same side on the axis, and then CR is also same side on the axis. Okay student, so if I found the normal to the ellipse, okay, so if I found the normal to the ellipse at point P, then P is equal to the AX sec theta, okay, minus BY cosec theta, it is equal to the A square minus B square. A square minus B square. Let this is our equation first. Okay. And for the Q, okay. So normal for the Q, if we check, this is Q is equal to AX sec theta plus 2 pi by 3 minus BY cosec theta plus 2 pi by 3. This is equal to the A square minus B square. Let this is our equation second. Okay, and for the R we check, so R is equal to the AX sec theta plus 4 pi by 3 minus BY cosec theta plus 4 pi by 3. This is equal to the A square minus B square. Let this is our third equation. Okay, so now normal are the concurrent, so we have to find out this. Okay, so if normal are the concurrent, then area, then delta is equal to the 0. Okay, so if we find out the delta value of the delta, then what we get here students, so here we get delta is equal to sec theta cosec theta. Okay, so delta is, for the first is, we can say R1 here, sec theta cosec theta, this is 1. Okay, and for the R2 we can say here sec theta plus 2 pi by 3. Okay, and cosec theta plus 2 pi by 3, this is also 1. And for the R3 we can say, so here we get sec theta plus 4 pi by 3. Okay, and cosec theta is also 4 pi by 3, and this is also 1. Okay, so now we have to solve this determinant. So if we solve this, so what we get here, if we have to solve this, if it becomes 0, if it becomes delta is equal to 0, then all three lines are concurrent. Okay, so for solving this, we multiply and divide the different row r1, r2, r3 by sin theta and cos theta. Okay, so if we divide it by the sin theta and cos theta and apply the operation for the r1, so here we apply the operation for the r1. Okay, so what we get here, if we multiply and divide that sin theta and cos theta, so here we get sin theta cos theta, and for the r2 similarly we get sin theta plus 2 pi by 3. Okay, and cos theta plus 2 pi by 3. Okay students, and for the R3 we apply the same condition, then what we get here, for the R3 we get sin theta plus 4 pi by 3. Okay, and cos theta plus 4 pi by 3. Okay,
So if we simplify this, then outside term, if we multiply the outside term, sorry, if we divide the outside term of the determinant, then what we get here? So here we get delta is equal to 1 upon, okay, delta is equal to, sorry, let me erase this, okay. So yes, delta is 1 upon sin theta cos theta, sin theta cos theta into sin theta plus 2 pi by 3, okay, into cos theta plus 2 pi by 3, okay, into sin theta plus 4 pi by 3, okay, into cos theta plus 4 pi by 3, okay. This is our constant term outside the determinant. So if we multiply the inside term of the determinant, then what we get here? So here we get sin theta. If we multiply, okay, so we get sin theta cos theta and sin 2 theta, okay. This is our row 1, and the row second is we get here sin theta plus 2 pi by 3, okay, cos theta plus 2 pi by 3 and sin 2 theta and sin 2 theta plus 4 pi by 3, okay, plus 4 pi by 3, okay. And the third row we get here sin theta minus 2 pi by 3, okay, cos theta minus 2 pi by 3 and sin 2 theta minus 4 pi by 3, okay. So here we apply another operation, okay. So here we apply another operation. Let's say sorry for that, okay. So here we apply another operation, sorry for that again, where R2, if R2 is equal to the, if we add R2 plus R3, okay. So if we add R2 plus R3, then simplify R2, okay. So then simplify R2, then what we get here? Here we get R2 is equal to the R1, okay. So if two row or two column are equal in a determinant, so value of the this is equal to the 0, okay. So value of delta is equal to 0. So if we further simplify this, then what we get here? So here we get delta is equal to the k. K is the our this constant term, okay. This constant term is we put equal to the k, okay. So k is our constant term. So what we get here? Here we get sin theta cos theta and sin 2 theta and sin 2 theta. This is our R1, okay. And if we add R2 plus R3, then what we get here? So here we get sin theta plus 2 pi by 3, okay. So here we get sin theta plus 2 pi by 3, okay, plus plus sin theta minus 2 pi by 3, okay, into cos theta plus 2 pi by 3, okay, plus cos theta minus 2 pi by 3, okay students.
this is like this. Okay, and if we multiply the if we add the third term, then what we get here? Here we get sine 2 theta, sine 2 theta plus 4 pi by 3 plus sine 2 theta minus 4 pi by 3. Okay, and that our r3 is constant here, so r3 is constant, which is equal to the sine theta minus 2 pi by 3. Okay, cos theta minus 2 pi by 3 and sine 2 theta and sine 2 theta minus 4 pi. Here is 4 pi, 4 pi by 3. Okay students, so if we simplify the r2, if we simplify the r2, then what we get here? R2 is equal to r1. So how we simplify the r2? So here see the condition: sine c plus sine d, cos c plus cos d, and sine c plus sine d. Okay, so if we apply the condition of sine plus sine d here, so which is equal to the 2 time of sine c plus d by 2 and cos c minus d by 2. Okay, so by using this identity of the formulas, we can solve this. Okay, so what we get here? Here we get delta is equal to, our r1 is sine theta, cos theta and sine 2 theta. Okay, and our r2 is, if we simplify the r2 as I told you with these conditions, then what we get here? So here we get minus sine theta minus cos theta. Okay, this is the minus cos theta. Okay students, so here is minus cos theta. Okay, and this is equal to the minus sine 2 theta. Okay, and our third term is as it is, and our third term is sine theta minus 2 pi by 3. Okay, cos theta minus 2 pi by 3 and sine 2 theta minus 4 pi by 3. Okay, so here r1 and r2 is equal. Okay, so if r1 and r2 is equal, then delta is equal to 0, and if delta is equal to 0, then our drawn normal are concurrent. Thank you. Hello everyone, let us solve the question. A tangent to the ellipse x square plus 4y square, this is equal to 4, meets the ellipse. So a tangent from this ellipse meets the other ellipse x square plus 2y square is equal to 6 at P and Q. The angle between the tangents at P and Q of the ellipse. So if we draw two tangents on this ellipse from the point P and Q, so we have to find out the angle between the tangents. So how we will do this? So we take any point ellipse. So the ellipse is x square plus 4y square, this is equal to 4. Now take a point on this ellipse. How we will take? Put y is equal to 0. So what is the value of x? X is equal to plus minus 2. So we will take only one point. So let us say x is equal to 2. So the point becomes 2, 0. This is the point on this ellipse. Now let us find out the, so what we are doing, we are trying to make an equation for the tangent from this point. So for we know the point, now we need the slope for the equation of the tangent. So let us differentiate this equation. Differentiate. So what we do, 2x plus 8y dy upon dx, this is equal to 0, or I can say dy upon dx, this is equal to minus
2x upon 8y. Now put this point 2 comma 0. So dy upon dx at point 2 comma 0 becomes minus 4 upon 0. So I can say the slope of this line is infinity. So I can say the line or tangent is vertical. So if this is vertical, so the equation of tangent becomes the x coordinate 2. So the equation of tangent x is equal to 2. This is the equation of tangent. Now this line cuts this ellipse at 2 points P and Q. So let us solve the equation, this equation and the second ellipse, which is x square plus 2y square is equal to 6. So if we solve these two equations, we will get 2 points P and Q. So put x is equal to 2 into this equation. So what we get? 2 square plus 2y square, this is equal to 6. So 2 square is 4, 6 minus 4 is 2. So y square is equal to 1. So y is equal to plus and minus 1. So we get 2 points P and Q. So coordinate of P, let us say the x coordinate is 2 only. So 2 comma plus 1, and the coordinate of Q, let us say 2 comma minus 1. Now from these 2 points we draw 2 tangents on this ellipse. So we know the point. Let us try to find out the slope of the 2 tangents. So what is the ellipse? X square plus 2y square, this is equal to 6. Now differentiate. So 2x plus 4y dash, this is equal to 0. So y dash is nothing but slope. So y dash is equal to minus 2x upon 4y. Now let us find out y dash means slope at point P. So the coordinate of the point P are 2, 1. So put the value of x and y. So minus 2 multiplied by 2 upon 4 multiplied by 1, which is equal to minus 1. Now find out the slope y dash at point Q. So minus 2 multiplied by 2 upon 4 multiplied by 1 multiplied by y, and the value of y for the Q is minus 1. So this is equal to 1. Now let us say the slope, this slope is m1, this slope is m2. Then what is the product of m1 and m2? m1 multiplied by m2. The product is 1 multiplied by minus 1. So this is equal to minus 1. If the product is minus 1 for the slope, then we say the lines or tangents are perpendicular. So what is the angle between them? The angle is equal to 90 degree. So 90 degree is the final answer. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पर मुझे दिया हुआ है कि टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P3,4 to the ellipse x square by 9 plus y square by 4 is equal to 1, touching the points of the ellipse at A and B. The equation of the locus of the point whose distance from point P and the line AB are equal. तो यानी कि एक पॉइंट P से मैंने एक एलिप्स पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. अब जब मैंने उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस एक पॉइंट से द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम, तो उस पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो किसी ए और बी पॉइंट पर टच किया होगा एलिप्स को. उन ए और बी पॉइंट्स पे मैंने क्या कर दिया है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया. अब मुझे एक और पॉइंट लेना है पी, सॉरी
एक और पॉइंट लेना है, रैंडम पॉइंट, जिसको मैं मान लो x मान लेता हूँ। इस रैंडम पॉइंट का डिस्टेंस B से और AB से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सिंपली ये अगर मेरी एक्सिस है तो जो मेरा एलिप्स आएगा वो मैं मान सकता हूँ कुछ इस तरीके का होगा, राइट। अब ये एलिप्स की इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, x²/9 माइनस प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1। तो यानी कि अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 3 और -3 है, तो यहाँ पर 4 और -4 है। तो ये जो लाइन है वो 3,4 पर है, तो यानी कि कहीं यहाँ पर लाइन होगी 3, तो ये आएगा 2, 4 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा -2। तो 3,4 कहीं यहाँ पर होगा जो कि इसके स्ट्रेट में है, राइट। ये और ये पॉइंट्स, ये दोनों लाइनें मेरी सीधी हैं, तो ये हो गया मेरा 3,4, ठीक है। तो एक जो होता है कि ए की वैल्यू मान लेता हूँ, मान लो यहाँ पर क्या पॉइंट है, ये हो जाता है 3,0। एक पॉइंट तो आ गया, बाय फिगर ही आ गया। अब जो दूसरी लाइन होगी जो कि बेसिकली मुझे फाइंड आउट करनी है वो कहीं यहाँ पर होगी, ठीक है। तो कोई भी इलिप्स की इक्वेशन मुझे दी हुई है, उस इक्वेशन में सपोज लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से कि x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1। तो इसके टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाती है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a² m² प्लस b²। सेम वे यहाँ से y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a² इज 9, m² प्लस b²। b² क्या है, 4। अब जो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज 3,4। सो 3,4 क्या करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 3,4 अगर इस लाइन को सेटिस्फाई करता तो ये हो जाता है 4 इज इक्वल टू 3m प्लस माइनस रूट ऑफ 9m² प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से आ जाता है 3m माइनस का 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 9m² प्लस 4। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। दैट मीन्स ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 16 प्लस 9m² माइनस 4 इज 12, 24m इज इक्वल टू 9m² प्लस 16, 9m² प्लस 4। ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो अब हमारा क्या बच जाता है, -24m इज इक्वल टू -12। m की वैल्यू आ जाती है 1/2। सो 3,4 से तो पास कर ही रहा था, तो x माइनस 3 और m की वैल्यू आ जाती है हाफ इज इक्वल टू y माइनस y1, दैट इज y माइनस y1 इज 4। तो इक्वेशन क्या बन जाती है, लाइन की जो इक्वेशन बनती है वो लाइन की इक्वेशन मेरी आ जाएगी x माइनस 3 is equal to 2y minus 8, that means x is equal to 2y minus 5। ये आ जाता है मेरा इक्वेशन, यानी कि इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2y minus x minus 5 is equal to 0 भी लिख सकता हूँ। तो अब ये जो मुझे लाइन दी हुई है 2y minus x minus 5 minus 0, ये लाइन बेसिकली क्या आ गई, इस इक्वेशन की ये लाइन आ गई, राइट। हमें ये पॉइंट A और B, ये पॉइंट निकालना है। तो अगर ये पॉइंट मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं जो इलिप्स की इक्वेशन है वो क्या दे रखी है मुझे, प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, राइट। तो x यहाँ पर था 2y माइनस 5, इसको दूसरे फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 4x² प्लस
9y² इज इक्वल टू 36। अब 4 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पर x की जगह पर 2y माइनस 5 का होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 9y² इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 4y² प्लस 25 माइनस 20y प्लस 9y² इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से क्या आ जाता है देखो, 16y² प्लस 100 माइनस 80y प्लस 9y² minus 36 is equal to 0. So this becomes 25y² plus minus rather 80y or minus 36, that means 64 plus 64 is equal to 0. So this can be written as 5y minus 8 का whole square is equal to 0. So y की वैल्यू हो जाती है 8/5. सो अगर y की वैल्यू 8/5 है तो यहाँ पर 8/5 पुट कर देते हैं, -5, दैट मीन्स 16 minus 5, दैट विल बिकम माइनस ऑफ 9/5. सो a और b की वैल्यूज आ गई. a है मेरा 3,0 एज ऑलरेडी सेड एंड b हैज नाउ बिकम -9,5 डिवाइडेड बाय एंड 8/5. सो अब इक्वेशन क्या बनती है, y माइनस 0 इज इक्वल टू यानी कि y1 -8/5 minus 0 divided by -9/5 minus 3 into x minus 3. That means this will become what? Y is equal to 8/5 divided by 5 to 15 minus 9 minus 15 minus 9 मतलब minus 24 by 5 x minus 3. ठीक है, तो y is equal to 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, 8 है तो यानी कि -1/3 है, x -3 हो जाता है, तो दिस बिकम्स 3y माइनस माइनस था यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस x -3 इज इक्वल टू 0. ये लाइन हो गई. ठीक है, तो अब अगर ये लाइन हो गई तो अब इस लाइन से उस एक पॉइंट को मैं मान लेता हूँ h, k. कोई भी पॉइंट है मेरा लाइन पे x1, y1 और लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a² प्लस b², तो ऊपर आ जाता है क्या, मॉड्यूलस. ठीक है, ये हो जाता है मेरा इक्वेशन. तो सेम वे h, k का इस लाइन से इक्वेशन क्या बन जाता है, 3k प्लस h माइनस 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 10, 3² प्लस 1. और h, k का किस पॉइंट से डिस्टेंस मुझे चाहिए, पॉइंट P, दैट वाज 3,4, 3,4. इससे भी डिस्टेंस चाहिए. सो d यहाँ पर क्या आ जाता है, h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वायर, राइट. अब ये जो दोनों d हैं ये दोनों क्या हो जाने चाहिए, सेम हो जाने चाहिए, यानी कि हम कर देंगे इन दोनों का स्क्वायर. सो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 9h² प्लस 9k² प्लस h² प्लस 9 प्लस 6hk माइनस 18k माइनस 6h डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, दिस बिकम्स, इसको अगर मैं यहाँ पर ही सॉल्व कर लेता हूँ तो ये हो जाता है h² प्लस 9 माइनस 6h प्लस k² माइनस 8k प्लस 16. So this becomes h² plus k² minus 6h minus 8k plus 25. ठीक है, तो अब 10 उधर पर ले जाएं तो 9k² plus h² plus
9 plus 6hk minus 18k minus 6h is equal to 10h square plus 10k square minus 60h minus 80k प्लस 250। ठीक है, ये बन जाता है। तो अब h स्क्वेयर और k स्क्वेयर है यहाँ पे, तो ये हो जाता है k स्क्वेयर प्लस 9h स्क्वेयर 60h प्लस 6h माइनस 60h प्लस 6h मतलब प्लस 54 सॉरी माइनस 54h और k माइनस 80k प्लस 18k दैट मीन्स माइनस 62k minus 6hk plus 9 and 250 minus 9 that is 241 plus 241 is equal to 0। तो यहाँ से h और k की जगह पर x और y डालना है, तो 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 54x माइनस 62k that is y minus 6xy प्लस 241 इज इक्वल टू 0। ऑप्शंस देखते हैं अब एक बारी। तो ऑप्शंस में देखो क्या आ जाता है। ऑप्शन है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 62y प्लस 241 दैट इज ऑप्शन 1। ये हो जाता है मेरा आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।